उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फाइन होंगे और अपने जिंदगी खुशी गुजार रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल जी हम आ गए हम आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर। रिक्वेस्ट की गई थी इस वीडियो पर लेट होने की वजह से मास्टर बहुत ज़्यादा थ्रोन ऑफ अल्लाह इस पर हम रिएक्ट करेंगे। देखते हैं कैसी वीडियो है, यकीनन बहुत अच्छी होगी। थ्रोन ऑफ अल्लाह अल्लाह। ओके जी लेट्स प्ले। इससे पहले कि हम प्ले करें वीडियो तो हमारी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से, और वो रिक्वेस्ट ये होती है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन पर क्लिक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले मिले आप लोगों को मिले। लेकिन एक और बात हम लोग भूल गए, वो ये है कि हम अपना नेम बताना भूल गए। मेरा नाम है मिसबा कमल, मुझे कहते हैं आसिया कमल। तो चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वीडियो हम आपके लिए कैसी लेकर आए। يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. All the praise is for Allah, who is the author of all existence and the most generous to his creation, while he is also the all-compelling. He is the only one worthy of our worship, having no partners, no associates, no sons, no daughters, no one whom he must consult, and no one or anything which has any comparison with him. All the praise is for Allah, who is the King of all who claim sovereignty, the only one who has the right to legislate for his creatures. He is the giver of life. He is the causer of death, while death has no effect upon him, because he is the ever-living, the self-subsisting, the eternal and the only absolute. All the praise is for Allah, who has power over all things, and there is in reality no power and no strength, no influence to cause benefit or detriment except through him. It is he who created this complex world, the seen and the unseen, the evident and the speculative, the earth and all that is on it and everything that is in it. It is he who sent his messengers and prophets, alayhimus salam, with the common message of strict monotheism, which simply means that there's absolutely no one worthy of worship, no one worthy of our obedience except the Almighty, the One, the Absolute, and who has no partners. The earlier messages which changed the world in the area in which the prophets were sent, those messages we know have changed, and even the prophets who brought them, their names are now lost. We just know in general because Allah told us in the Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. I've sent to every nation a messenger, calling people to worship Allah alone and to avoid the worship of false gods. This essential message has been preserved in Islam in a way that it was never preserved before. Not because the message was different, because it was the same message, but because of the fact that there would be no other prophets who would come
after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So therefore that message now had to be protected. It had to be preserved in a way none of the earlier messages were preserved. I will tell you this, what you say you have come to know 40 years back, and what you call the Big Bang is already mentioned in the book which I read, the glorious Quran. It's mentioned 1400 years ago in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, which says, Avalam yaral lazina kafaru. Do not the unbelievers see anna samawati wal arda kanat ratkan fataqnahuma, that the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. What you're talking about, the Big Bang, I try and imagine compressing a spring. I push it closer and closer and closer together, so it's smaller and smaller and smaller, and I've stored a tremendous amount of energy in that spring, and when I let it go, it bursts out, it bursts out, it bursts out. the creation of the universe, which you came to know 40 years back, is already mentioned in this book, the glorious Quran, 1400 years ago. Who could have mentioned that in the Quran? So the atheists will say, maybe someone wrote, maybe it's a fluke, maybe it's a guesswork. A human being, regardless of who they are, or where they are, or what they do, will have this curiosity. They'll want to know, why am I here? How did I get here? And do I have a purpose? And if so, what is it? The only one who would really be able to answer that question would be the Creator himself. If there is a Creator, it would be up to him to tell us why we were created and what he expects from us and what this life is really about. Allah has shown the people from the time of Adam until right now, has shown the people what he wants from them. And it's a very simple thing, and that is that worship be for him alone without any partners. In fact, we know this life to be a test from Almighty God. That's why we're born, and that's why we die, because there has to be a beginning and an end for us to be tested on. The next life, after this life, no one will ever die again. A bad person or a good person. Both are brought back, and they continue to live in the next life, either in good shape or not so good shape, depending on how they did on the test. The worship of the God of Abraham, that was what was taught by these prophets. The Lord of the Arsh and Kursi. We're talking about the Lord of the worlds. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We're talking about the Lord of the entire universe and beyond. The entire universe and beyond. You know, we live in this dunya, and we are fascinated with this dunya which Allah subhanahu wa ta'ala indeed has created in a beautiful manner. We're fascinated. There are over billions of people which live on this dunya at this moment in time. Over 6 billion people that live on the dunya at this moment in time. This dunya of Allah subhanahu wa ta'ala is so big that there is space in this dunya for billions and billions and billions or more people. But what is this dunya in comparison to what Allah subhanahu wa ta'ala has created out there? This dunya is insignificant. This dunya is meaningless to Allah. It means nothing. It is worthless. So worthless, compare it with the sun. The sun is one star. You know more science than me. You'll be able to tell me better. Take this planet Earth and you place it inside the sun, and you will be able to place 1.3 million Earths in the sun. 1.3 million Earths in the sun. Allahu Akbar. Allah is the greatest. The sun is one star. One star. There are stars out there which are millions of times bigger than the sun. You tell me this, that you need millions and millions of stars to make one galaxy. And then you tell me this, that there are zillions of galaxies out there. Let me tell you on top of this, my friend. After this, whatever you see above, when you raise your head and you look above, whatever you see above, the zillions and zillions and zillions of galaxies,
let me tell you, this is everything there is within the first heaven. Everything there is within the first heaven, and Allah is the creator of 7 heavens. 7 heavens. And the distance between the first heaven and the second heaven is 500 years. You know, the distance that can be covered in 500 years, at what speed? Only Allah knows. Only Allah knows. But it will take 500 years to get from the first heaven to the second heaven. 500 years from the second to the third, third to the fourth, fourth to the fifth, fifth to the sixth, sixth to the seventh. Every time it will take 500 years. After the 7 heavens, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. You all read the Ayatul Kursi. You all know the Ayatul Kursi. After this you have the Kursi of Allah. You have the chair of Allah subhanahu wa ta'ala. You know these 7 heavens that we've just talked about, in comparison to the Kursi of Allah, they're non-existent. They're meaningless. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given an example in a hadith just to give us a little bit of understanding with regards to the 7 heavens in comparison to the Kursi of Allah. Take a ring from your finger, take it off, the small ring that you have, and place it, let's say, in a desert, the Sahara Desert. It's the biggest desert in the world. You know that ring that we take off from our fingers and place it in the Sahara Desert? What comparison is in between the ring and the Sahara Desert? Nothing. Nothing. The 7 heavens is the ring, and the Kursi of Allah is the Sahara Desert. After the Kursi of Allah, you have the Arsh of Allah. وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. You have the Arsh of Allah. Again, Rasulullah has given, has explained, so just so that we can understand. Take the ring, place it in the desert. This time, the ring is the Kursi and the Arsh is the desert. What is the Kursi in comparison to the Arsh of Allah? Nothing. Then you have angels which carry the Arsh of Allah. Their heads are in the 7th heaven and their feet are in the lowest earth. My friends, then you have the Lord of the Arsh al-Kursi. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. He is beyond the size of Allah, who Allah is, what Allah is. The greatness of Allah is beyond the comprehension of my little mind. This is the being that you and I are messing with. وسع كرسيه
बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन, बहुत ही ज़बरदस्त बताया गया था। हु इज़ अल्लाह, फर्स्ट ये था क्वेश्चन। तो तमाम तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। बेशक नो वन कोई नहीं हो सकता उसके बगैर इबादत के लायक, उसके बगैर किसी के आगे नहीं हम झुक सकते। अल्लाह सिर्फ एक ही ज़ात है, वाहिद है। अल्लाह वाहिद है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई बेटी है, ना उसकी कोई बीवी है, औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह ताला यकता है, वाहिद है और ला शरीक है, मतलब उसका कोई शरीक नहीं हो सकता। उसके अलावा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। और तमाम नेशंस के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम भेजे और सबको, हर नबी को यही बताकर भेजा कि अपनी कौम से जाकर ये कहना कि अल्लाह वाहिद है और उसी की इबादत करनी है, अल्लाह के अलावा। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग डिफरेंट चीज़ों की वो किया करते थे पूजा। कुछ लोग सूरज की पूजा किया करते थे, कुछ आग की, हाँ आप भी करते हैं। लेकिन जब आए अंबिया भेजे तो क्योंकि सूरज, चाँद, सितारे, ये ज़मीन और बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो तो अल्लाह की क्रिएशन है। असल में होता ये था कि लोग जब देखते थे ना कि ये देखें सूरज जब इतनी ज़्यादा, मतलब कि सूरज जब फुल दोपहर हो जाती है तो कैसे तपती हुई धूप जो हमें फील होती है, तो लोग जो चीज़ देखते थे ना ज़्यादा पावरफुल देखते थे उसकी पूजा करना शुरू कर देते थे। ऐसा होता था। चांदारों की पूजा शुरू कर देते थे, जो उन्हें अच्छी लगती थी। समंदर का पानी बहुत ज़्यादा देख कर डर जाते थे, उसकी पूजा शुरू कर देते थे। मतलब कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है उलमा कराम ने कि नबी जो हर चीज़ है वो अल्लाह ताला की क्रिएचर है। यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ हमें हम लोग भी, दुनिया भी, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ जो दुनिया है ना, जो अल्लाह ताला की कुर्सी है ना, अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे पास एक सहरा है, सहरा की तरह है। मतलब कि उनकी जो उनकी अल्लाह की जो ज़ात है, अल्लाह की जो कुर्सी है वो सहरा सहारा का नाम लिया यहाँ पे उन्होंने। सहरा सहारा का इसलिए नाम लिया क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा जो है वो सहरा सहारा है, ठीक है। और जो पूरी कायनात है, जो 7 हेवंस हैं, मतलब के 7 आसमान जो हैं, और जी बिल्कुल, और वो 7 आसमान जो है वो एक छोटी सी रिंग की तरह, उन्होंने रिंग से उसने एग्जांपल दी कि अगर रिंग को हम 7 सहरा सहारा में फेंक दें तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी हमें। लेकिन अल्लाह की जो कुर्सी होगी वो तो सहरा सहारा से उसने तशबीह दे दी ना उसको। हालांकि सहरा सहारा क्या चीज़ है, वो भी तो अल्लाह ताला ने बनाया है। सहरा सहारा मतलब रिंग और सहरा सहारा की तशबीह दी। कायनात जो है, जो अल्लाह ताला ने बनाई खुद, वो एक रिंग है छोटी सी, और जो अल्लाह ताला की कुर्सी है वो एक सहरा सहारा है। मतलब कि अल्लाह ताला की हर चीज़ पे नज़र है। हर चीज़ पे नज़र है। एक आसमान का डिस्टेंस कितना बताया गया, 5000 साल, ईयर, 500 ईयर्स। और फिर उसने ये कहा, क्या तुम लोग देखते नहीं हो क्या आसमान, हम लोग एक छोटी सी इमारत बनानी तो हम कोई पिलर खड़ा कर देते हैं बड़ा सा, हमें सहारा भी तो चाहिए होता है ना उससे छत को। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि देखो तुम लोग देखते नहीं हो क्या एक हेवन के दरमियान में और ज़मीन, आसमान और ज़मीन के दरमियान में कोई पिलर नहीं है। हम लोग देखते हैं ज़ाहिर तो कोई पिलर नहीं है, तो ये ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ एक अल्लाह कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने सूरत मुल्क में भी जिक्र किया है 7 आसमानों का। अल्लाह ताला ने किया, और जिसने 7 आसमान बनाए एक के ऊपर एक, क्या तुम उसमें कोई नुक्स देखते हो? तुम अपनी निगाह उठाकर देखो, क्या तुम्हें कोई दिखना नज़र आता है? और फिर अल्लाह ताला ने कहा, एक बार फिर अपनी निगाह उठाकर देखो और तुम्हें कोई दिखना नज़र नहीं आएगा, तुम्हारी निगाह वापस पलट कर आ जाएगी। और बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही, नुक्स निकाल ही नहीं सकते। और फिर दूसरी चीज़ें बनाई गई हैं। दूसरी चीज़ जो एक आलिम यहाँ पे बयान कर रहे थे, बिग बैंग थ्योरी की बात हो रही थी। अब बिग बैंग थ्योरी तो हमारे तो यहाँ पे अब हम लोग अब पढ़ते हैं किताबों में बिग बैंग थ्योरी कि ये ऐसा दुनिया इस तरह से क्रिएट हुई थी। और उसने कहा कि आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई, कुरान मजीद जिसको हम कहते हैं, वो वही की सूरत में नाजिल हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसमें ही बयान कर दिया गया था। कुरान पढ़े तो ये सारा दुनिया कैसे क्रिएट हुई है, ईच एंड एवरीथिंग जो साइंस अब बता रही है हमें, कुरान में 1400 साल पहले बयान कर दी गई है। वो हम लोग वो एक थ्योरी किसी ने रिसर्च की, अंग्रेज़ के साइंटिस्ट ने, उसने कहा कि अगर हम 5 बार अपना फेस धो लें, हाथ पैर धो लें, तो हम बिल्कुल जरासीमों से पाक हो जाते हैं। तो देखो ना, आज से 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो वज़ू करके, ठीक है, मतलब कि वो उन्हें पहले ही पता थी।
और ये अब रिसर्च कर रहे हैं उसके और ऊपर। जब हम वजू करते हैं, हम कुल्ली करते हैं, ज़ाहिर बात नाक है। में पानी डालते हैं, इवन मसा करते हैं तो कानों को भी साफ करते हैं, गर्दन पे ऐसे फेरते हैं, ऑटोमेटिकली मतलब साफ हो जाता है ना, मतलब चेहरा जरासीम जर्म्स जो हमें लग जाते हैं जी, तो बिल्कुल। ये बहुत मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला वीडियो थी, बहुत ही जिन्होंने रिक्वेस्ट की, इम्प्रेसिव। बिल्कुल बहुत उनका बहुत बहुत impressive, शुक्रिया जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, शुक्रिया। तो हमें भी देखने का मौका मिला, क्योंकि हमने पहले ये नहीं देखी। हाँ बिल्कुल। बोलने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, कभी इस्लाम इतना वसी है, इतना वसी है, इतना वसी है कि हम हमारे पास तो थोड़ा सा नॉलेज है उसको लेके। और अल्लाह को तो सभी मानते हैं, हमें पता है, अल्लाह को तो सभी जानते हैं, तो- सबको ही पता है कि ये दुनिया जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है। बिल्कुल एक ही ज़ात है, एक ही सबको, कि अगर आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी के अगर 2-3 हिस्सेदार हैं तो उनकी लड़ाई हो जाती है, तो कायनात इतनी बड़ी अगर 2-3 खुदा चलाएंगे तो चल ही नहीं सकती है। वो वाहिद ज़ात है, एक ही है, अल्लाह ताला एक ही ज़ात है जिसने पूरी कायनात को कंट्रोल किया हुआ है और हर चीज़ उसके हुक्म पे चलती है। वो बेशक दरिया हो, समंदर हो, सहरा हो, दिन हो, रात हो, जो मर्जी हो, चांद सूरज सितारे सितारे जो मर्जी हो, हर चीज़ उसकी मर्जी से है। तो जी हाँ, आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसा लगा जी ये हाँ, आप सब। लोगों को कैसी लगी वीडियो, हमारे साथ देखने में कैसा लगा, आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ ही हम दुआओं में चलते याद हैं। रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ओके, मिलते अल्लाह हैं नेक्स्ट हाफिज़, वीडियो, बाय। बाय।